वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके अक्रॉस सब्सटेंसेस आईसीएफ से ईसीएफ एनवायरनमेंट की तरफ एंड टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं। There are some small uncharged molecules which can diffuse freely across the membrane, whereas there are certain non-polar molecules, for example, the gases oxygen and carbon dioxide, which are soluble in the hydrophobic lipid bilayer, उसके साथ interact करते हैं and then they can readily pass through the cell membrane. वहीं पे जो small uncharged polar molecules हैं जैसे कि water, it can freely pass through the cell membrane by passive diffusion, or it can move by facilitated diffusion through aquaporins. The charged molecules जैसे ions हुए, ठीक है, या थोड़े बड़े molecules हुए जैसे ग्लूकोज वगैरह, they are unable to diffuse freely through the lipid bilayer, so they can be transported by certain membrane proteins जिन्हें हम transporters कहते हैं, and they are either the carrier proteins or the channel proteins which and the pumps. ठीक है, ions के लिए pumps होते हैं which mediates the movement of these ions across the membrane. So the transport mechanisms associated with the plasma membrane include the passive transport, active transport, bulk transport, and the vesicular transport. But in this section of the lecture today, we shall focus only on the passive transport. In the next lecture, I'll be talking about the active transport. So what is passive transport? Passive transport is when the substances, they move down the concentration gradient. Concentration gradient means the concentration of the particles of the substances, they will be moving from their higher gradient towards their lower gradient. And this is a very natural process. So it does not require any ATP. कोई भी energy consume नहीं होता है जब downhill transport होता है molecules का from their higher concentration towards their lower concentration. Passive transport के types हैं simple diffusion, facilitated diffusion, and osmosis. The thumb rule that is applicable for all the three types is that the substances would be moving from higher to lower concentration without the expenditure of energy, that is the ATP. तो ये lines हर एक तीनों types के लिए applicable है. So I might not be repeating it again. Now let's take in detail simple diffusion. This is a non-selective process. क्योंकि यहाँ पे molecules जो है they are able to dissolve in the phospholipid bilayer which is hydrophobic, और वो इस barrier को cross कर जाते हैं. इस lipid bilayer के साथ इसके अंदर dissolve होके these can cross. ठीक है, so the molecules they are moving through the lipid bilayer driven by their concentration gradient, जैसे मैंने बोला, from higher to lower. Simple diffusion is shown by certain small non-polar molecules like oxygen and carbon dioxide and certain hydrophobic molecules like benzene. Now, facilitated diffusion और simple diffusion में क्या फर्क है? वहां पे smaller molecules थे, यहाँ पे movement है यहाँ पे larger और polar molecules का, जैसे they can be some carbohydrates, it could be amino acid, nucleosides and ions. तो ये जो larger molecules हैं in size as well as certain polar molecules, वो जब अपने concentration gradient के along move करते हैं, ठीक है, या अगर हम ions की बात करेंगे तो the movement we say it is down their electrical potential across the membrane. So these molecules, these larger molecules, they fail to interact, they fail to dissolve actually in the phospholipid bilayer. So how they are transported? They are transported with the help of certain membrane proteins, जिनको हम transporters कहते हैं. और ये transporters carrier proteins भी हो सकते हैं and they can be channel proteins which will facilitate the facilitated diffusion. So how carrier proteins help in facilitated diffusion and likewise how channel proteins mediate the facilitated diffusion will be discussed in the next slide. So this is facilitated diffusion by carrier protein.
Now, what are carrier proteins? Carrier proteins integral membrane proteins है. If you see this diagram here, these are the carrier proteins. ठीक है? This is in blue, ये जो bubbles का दिख रहा है. ठीक है? This is the head and these are the tail. So this is the hydrophobic lipid bilayer, right? उनके बीचों बीच उनको दोनों bilayers को traverse करते हुए ये integral membrane proteins होते हैं, which help specific molecules like sugars. फॉर एग्जाम्पल इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, विच इज ऑल्सो शोन हियर इन द डायग्राम. सो द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर, सर्टेन अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, दे मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू दीज कैरियर प्रोटीन्स. नाउ दीज प्रोटीन्स दे बाइंड टू द मॉलिक्यूल. बहुत स्पेसिफिक होती है ये बाइंडिंग, जैसे कि किसी एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है. लाइकवाइज यहाँ जो ये ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल जो है जिसे हम कैरियर प्रोटीन कह रहे हैं, सो दिस विल बी वेरी स्पेसिफिक फॉर अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. तो जब वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अपने ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, तो एज सुन एज इट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, इसके अंदर एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है, और वो कॉन्फर्मेशनल चेंज की वजह से द मॉलिक्यूल इज टेकन इनसाइड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म. As soon as the molecule is being released into the cytoplasm, again there is a conformational change which restores the transporter back to its original conformation, right? So the binding of the molecule to be transported inside the cell triggers the conformational change, and this conformational change results in the flipping of the transporter to face the inner side and releasing the molecule. This exhibits saturation kinetics also, meaning the transport rate reaches a maximum when all binding sites are occupied. तो जब binding sites सारी occupy हो जाएंगी, तो there will be the maximum transport rate, maximum amount of molecules would be taken inside. And the best example to demonstrate here is the glucose uptake. There are special transporter carrier proteins, GLUT transporters बोलते हैं, जो कि ग्लूकोज को अपटेक करते हैं. Then facilitated diffusion by the channel protein. Channel proteins are again transmembrane proteins that create hydrophilic pores in the hydrophobic bilayer, right? तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक बाइलेयर है वो बाईपास हो जाता है. इसी लेयर के अंदर कुछ चैनल्स बन जाते हैं, ठीक है, बेसिकली पोर्स बन जाते हैं which are hydrophilic in nature, और उनके थ्रू larger molecules and there are certain ions which can move across. This is selectively permeable, which allows only specific molecules or ions which are and the molecules which are polar to pass through based on their size, charge and the other characteristic. Examples are like for the movement of water across the membrane, there are certain pores. ठीक है, उन पोर्स को हम कहते हैं एक्वापोरिन्स. Likewise, for the transport of some specific ions, ठीक है, there are these channels जिनको हम ion channels कहते हैं, and these are very significant जब हम nerve impulse transmission देखते हैं या muscle का contraction देखते हैं, तो these ion channels के through ही ये जो important ions हैं इनका transport inside और outside of to the environment facilitate होता है. Now these are also some gated channels. Gated channels क्या है? These are the channel proteins which are gated, meaning they can open or close in response to some specific stimuli. अब ये stimuli क्या है? If the stimuli is voltage, तो हम उनको कह देते हैं voltage gated channels हैं. ऐसे ही अगर ये जो channels हैं, if they are bound by certain specific molecules, like it could be some neurotransmitters, it could be some signaling molecules, तो उन channels को हम कह देते हैं that they are ligand gated channels. Okay, so these channel proteins, they are nothing but they are hydrophilic pores created in the bilayer, right, for the transport of ions. Then the last type of passive transport, osmosis. This is the movement of a solvent, which is generally water, across a semi-permeable membrane from an area of lower solute concentration to an area of
higher solute concentration, or we can say in other terms, जो कि शायद थोड़ा इजी होगा रिलेट करना, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करना across the semi-permeable membrane, that is called as osmosis. And this movement um, keeps continuing till the concentration of solute on both sides of the membrane becomes equal. Now, if you see this diagram, I can explain you here. This is the cell and this is the ICF, the cytoplasm of the cell. और ये सेल के बाहर का extracellular matrix है. जो ये स्मॉलर ब्लू कलर के आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स वाटर एंड द बिगर वाइट जो सर्कल्स हैं, दिस इज सॉल्ट. सो इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस शोज कि ECF में, ECF मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, यहाँ पे पानी ज्यादा है, सोल्यूट कम है. ठीक है, सो दिस सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक बेसिकली. Whereas if we see inside the cell, salt ज्यादा है, पानी कम है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाइपरटोनिक मीडियम हो गया इन रिस्पॉन्स टू द वाटर कंटेंट. तो यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पानी ज्यादा है. तो हमने ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन किया? इफ यू लुक एट द लास्ट सेंटेंस, द मूवमेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. सो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है. सो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विल बी फ्रॉम ECF टुवर्ड्स ICF. इसको दूसरी तरह से समझेंगे. एक्चुअल डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था? द मूवमेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? इट इज द वाटर. बट बेसिकली वाटर ही मूव कर रहा है, बट इस वाटर की मूवमेंट को कौन डिसाइड कर रहा है? From an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration. तो यहाँ पे आप देख रहे हो लो solute है. लो solute का मतलब this is less concentrated, or I can say this is a dilute solution or a hypotonic solution, किसी भी तरह से कह सकते हैं, towards the side where solute concentration is higher. यानी कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, तो जिसका मतलब ये मीडियम क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है, हाइपरटोनिक है. तो लोअर सॉल्ट से हायर सॉल्ट की तरफ मूव करना, या हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जो वाटर मूव करता है, टिल the concentration of solute becomes equal on both the sides. This is called as osmosis. So these are the three types of passive transport. Higher concentration to lower concentration मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और इन तीनों प्रोसेस में चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड है या ऑस्मोसिस है, यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा. सो दिस इज कॉल्ड एज पैसिव. पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में the difference is facilitated means the transport is facilitated. It is held by another molecule, which is the carrier protein, the transporter molecule. But again, no energy being used. And osmosis is the passive transport from higher to lower concentration without expenditure of energy, exclusively for वाटर. जब हम वाटर का मूवमेंट बताते हैं फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, वी से इट इज ऑस्मोसिस. सो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सो इट मेंटेन्स बेसिकली द होम्योस्टेसिस. नाउ फॉर द uptake of nutrients from the extracellular matrix, as well as for removal, for eliminating the waste products that is produced by cellular metabolism inside the cell. If that is to be thrown out of the cell, to mediate these processes of uptake and of removal, the passive transport has the importance. Also, osmosis, it helps in maintaining the cell volume. It helps regulate the water content of the cell, which is again very important, very crucial for the proper functioning of the cell, right? So this is the passive transport. Again, movement of solutes, that's solute or the molecules precisely from their higher concentration to their lower concentration without expenditure of energy. I hope it is clear. Thank you.
and stay blessed.